Hello everyone, welcome again to the Innovation Hub live sessions. So, our today's session is all about interfacing actuators with Arduino. So we had some problem in the last session, so we can't continue with the session. So today we'll continue the session, whole session from the starting. So, I'll just give you the brief about the last session. Before that session, we learned about interfacing sensors with Arduino. So, हमने देखा कि what actually is Arduino, what actual sensors, how many types of sensors. For example, IR sensor. That's an infrared sensor. How infrared sensor works, or what is the actually application and the use of the infrared sensor. Then we saw ultrasonic sensor, like how ultrasonic sensor or where we can use that sensor. Okay, PIR sensor, there are types of sensor, the active sensors, passive sensor. Then we saw how to connect that sensor using Arduino or using that platform that called Tinkercad. Okay, we connected things and we start observing how that actually things works, है ना? हमने इन सब चीजों के बारे में इससे पहले सेशंस में इंटरफेसिंग सेंसर्स विद आर्डिनो में देखा था. अब हम देख रहे हैं, सो देयर इज अ प्रोसेस, है ना? Actually, there's an electronic process you all learned in computer science or in the subject of computer also. So, what is actually the process? Input, processor, and out. So, हमें we will learn everything. Okay, one by one. So, first we learned the process. Process was what? The processor. That's the brain. So, हमने brain के बारे में पढ़ा. That is called electronics development board की session. Okay. Then next, input. So where that input comes from the sensors, है ना? फिर हमने देखा कैसे हम सेंसर्स को प्रोसेसर के साथ हम कनेक्ट करते हैं. तो हमने दो चीजें देख ली. We done with the two points. First with the input, that is called as sensors. The second with is the processor, that is called as electronics development board. Now we'll see the third thing, that is called as actuator, that is called as output. So the process is input, processor, output. Now we'll see the output thing, that is called as actuator. So actuator is a technical word. So let's see. So this is a table of content. What actually we are going to learn in this session is, first thing is, what is an actuator? एक्चुएटर क्या होता है ये हम देखेंगे सबसे पहले. सेकेंड थिंग इज बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एक्चुएटर्स, कि हाउ एक्चुएटर वर्क्स और व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एक्चुएटर. थर्ड वन, types and applications of actuators. Then comes with the how to interface different types of actuators with Arduino. So this is the main point we're going to discuss in this session. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो this is the main point we're going to discuss in this session. Okay, so let's start with the introduction to actuators. तो जैसे मैं हमेशा सेशंस के पहले बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, if you have any doubt in between the session, you can write it down in the comment section. Okay, और if you want to learn जो हमने last sessions में सीखा, you can go through that video also. और we have a platform. हमारे एक platform है, is called as novation.ai. Novation.ai. So you can go and register yourself in the novation.ai. See what things you want to learn. There are different types of courses available in that novation.ai. Whether you can learn robotics, electronics, 3D printing, app development, artificial intelligence, and machine learning. All things are there and all free. So you can just go and grab that thing. Okay, if you want to learn more about in that thing. So अगर आप देखेंगे हर कोर्स में आपको असाइनमेंट क्विज भी मिलेगी, तो आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हो कि हम कितना हमने सीखा.
सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप इवेल्यूशन करते हैं अपने आप का, तब आपको पता चलता है कि आपने कितनी चीजें सीखी। दैट्स व्हाई हमारे एग्जाम्स होते हैं। ओके, so let's start with the introduction to actuators. So actuators are the devices that converts electrical energy or sorry electrical signal into mechanical movement. Okay, so actuator क्या होते हैं? Actuator इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, उसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल के मूवमेंट पे। अब आप सबको ये बताना है, यू हैव टू टेल मी द थिंग कि आप लोगों ने कितने कंपोनेंट्स या कितने डिवाइसेस ऐसे कुछ देखे हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल के मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। हाउ मैनी यू ऑब्जर्व द थिंग दैट ओके how many types of components you saw in your life or in your home or around you, okay, that works like in seeing this principle. It converts the electrical signal into the mechanical movement. Okay, write it down. I will tell you about more about that components and all. So this is the basic definition of actuator. The actuators are the device that convert electrical into the mechanical movement. But if you take an example of its usage, हम कहाँ इसे यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको लिखना है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं, आप जो आपके अराउंड जो चीजें हैं, आपके घर में, आपके रूम पे, आप एक बार देख के बताइए कि आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो एज अ एक्चुएटर की तरह वर्क करती है। एक्चुएटर की तरह वर्क करती हो का मीन्स इट विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द मैकेनिकल मूवमेंट। अभी क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मैकेनिकल मूवमेंट? सो एग्जांपल इज at home motors are being used at many places. So मोटर, आपने वर्ड सुना होगा, हम घर पे कहीं पे भी देखते हैं, या ये मोटर घूमने वाली निकाल के उसे वी जस्ट कनेक्ट दैट मोटर विद द बैटरीज एंड ऑल। ओके, सो हम ये करते हैं। सो मोटर एक एक्चुएटर है। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल मूवमेंट, मोटर घूम रही होती है, रोटेटिंग, तो वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल मूवमेंट। अब हम मोटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सो देख, मोटर्स विल यूज इन फैंस, हमने देखा होगा फैंस में हम यूज करते हैं, एसी एयर कंडीशंस में, वॉशिंग मशीन, तो आपने देखा वॉशिंग मशीन में हम वी पुट द क्लॉथ इनसाइड एंड देन स्टार्ट द मशीन एंड विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो वो रोटेट कैसे होती है? द हेल्प ऑफ मोटर। ओके, सो मोटर इज अ टाइप ऑफ एक्चुएटर। अब ऐसे ही आपने, जैसे मैंने मोटर का एग्जांपल आपको बताया, ऐसे ही आपने कितने टाइप के एक्चुएटर्स देखे हैं? You can write it down this thing in the comment section. Okay, so same as the motors are used by you all in your daily life at home, so at a workplace, or even when you are driving or traveling or driving. Okay, so there's a most important example regarding the motor, है ना? आप सबने सुना होगा, अभी आप देख भी रहे हैं, है ना? Things are changing rapidly. So what topic I'm talking about is a electric vehicle. ओके, आप सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही है। हम पहले इतना नहीं देखते थे, बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है? हाउ इलेक्ट्रिक, अब जैसे मैं दूसरे व्हीकल की बात करूं, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक दे हैव इंजन। इंजन क्या करता है? पिस्टन्स के थ्रू पावर जनरेट करता है, उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं हम व्हील्स में और गाड़ियां चलने लगती है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इंजन नहीं होगा। सो सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है आपकी बैटरीज होती है, ठीक है? बैटरीज का पावर जो होता है, बैटरीज का पावर जाता है मोटर। जैसे ही आप गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, मोटर स्टार्ट रोटेटिंग, तो जो बैटरी है दैट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर जाता है किसमें? मोटर पे। मोटर क्या करती है? उस इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल मूवमेंट, मतलब घूमने में कन्वर्ट करती है। तो वहां पे हम मोटर यूज करते हैं, ठीक है? अगर आप वर्क प्लेस की बात करें, आप लिफ्ट यूज करते हैं, स्कूल जाते हैं लिफ्ट यूज करते हैं, वहां पे हम मोटर यूज करते हैं। ड्राइविंग का एग्जांपल मैं आपको बता ही दिया, ट्रैवलिंग में भी, मतलब मोस्टली हर जगह पे आप एक्चुएटर्स का यूज करते हैं, बट समटाइम यू डोंट नो कि दिस इज कॉल्ड, दिस इज एक्चुएटर। ओके, जैसे मैंने भी आपको बताया, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मोटर को भी हम एक्चुएटर बोलते हैं। सो दैट्स द थिंग, वी हैव टू लर्न द थिंग्स। ओके, बाय around us, things are, lot of things are there. Okay, so probably there's not a single day when you are not using a motor.
Okay, not a single day. Every day we are using the motors and all. So, what is a motor? So there's a question comes in our mind. What is a motor? हम मोटर की बात कर रहे हैं. We are discussing about the motor, but what actually things a motor? आप देख सकते हैं. As you can see in the screen, the function of motor, how motor works. So what is a motor? A motor is a machine that converts electrical signal into the mechanical energy. है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है मोटर. सो इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ बैटरी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक बाइक आपने देखी होगी, ई बाइक्स आती है ना. तो उसमें उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? बैटरीज. एंड द मैकेनिकल एनर्जी क्या है? वो बैटरी से पावर जाता है मोटर्स पे. मोटर विल रोटेट. सो रोटेशन इज मैकेनिकल एनर्जी, है ना. सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दी मैकेनिकल एनर्जी. बट हाउ? How it is possible converting the mechanical electrical energy to the mechanical energy? You can see in the image. Okay, it's showing the working of motor. So it has two magnets. You can see N and S is a magnet. Is a north pole, is a south. है ना? Then the wire, a couple of wires are inserted in between them. The middle of that, you can see the rod is there. Okay, so when you give the power to the north and south, and you can just give the electrical energy, it will start rotating. So it will converting the electrical energy to the mechanical movement. How? So motor works. You can see in the image. Motor works on the following phenomena. What is that actually a phenomena? The motor's phenomena. So when electric current flow through an electric wire placed between two magnets facing each other. You can see in the image, there's a yellow one is an electric wire. Okay. So electric wire क्या कर रहा है? Electric wires when current flow through the electric wire. तो electric wire है जिसके दोनों तरफ में मैग्नेट्स लगे हुए हैं, the north pole and the south pole. ओके. तो जब उस वायर में करंट फ्लो कराते हैं, इट जनरेट्स फोर्स. ओके. व्हाट इज द फोर्स? है ना, जब आपने एक वायर को बीच में, एक वायर को रखा दो मैग्नेट्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, आपने पावर दिया, तो इट जनरेट्स अ फोर्स. दिस इज बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर, है ना, इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड. है ना, जब आप इलेक्ट्रिक वायर पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो मैग्नेट की वजह से वहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. सो द मैग्नेटिक फील्ड्स attracts or repels the magnetic field from the magnet. तो वो क्या करते हैं? Attracts और repel करते हैं. कभी खींच रहे हैं, हम कर रहे हैं. So which generate force to move the electric wire. तो वो electric wire क्या करता है? घूमने लगता है because of the magnetic field. It start attracting each other. So this is how motor works. ओके. मोटर इस तरीके से काम करती है. दो आपने यहाँ पे लास्ट इमेज में भी देखा. अब देख सकते हैं बीच में वायर्स हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स, उसमें एक शाफ्ट लगा हुआ है, दो तरफ मैग्नेट है. तो जैसे ही आप उस वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग और रिपलिंग. ओके. और उसी की वजह से क्या होता है? आप देख सकते हैं मोटर शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट भी घूमने लगता है. ओके. सो दिस इज हाउ मोटर वर्क्स. इस तरीके से मोटर काम करती है. राइट. होप आप सबको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ मोटर. आप एक बार देखिए और अच्छे से समझिए. जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड novation.ai. आप वहां पे भी जा सकते हैं, आप वहां से और चीजें सीख सकते हैं. अब मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ. ठीक है. अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड वर्ल्ड जो है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड और इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड जो है, वहां पे आपको एग्जांपल्स बताए कि एक्चुएटर्स के एग्जांपल क्या होता है. एक्चुएटर्स एंड ह्यूमन बॉडी कैसे सेम, है ना. तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इमेजेस लगाए हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बॉडीज में एक्चुएटर्स कैसे हैं. सो यू कैन कंपेयर एक्चुएटर्स विद ह्यूमन बॉडी मसल्स. ओके. यू कैन सी द इमेज. So as our muscles exert mechanical action to the environment, which then gets converted into movement of our hand or leg, actuators do the same thing. Okay.
What muscles provide? It provides the mechanical force to move the joints. ना जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, मसल्स क्या करती है, उसको मैकेनिकल पावर देती है मूव करने के लिए. ओके, रिजल्टिंग इन मूवमेंट ऑफ हैंड्स, legs, and the other body parts, same as the working of the motor also. Motor can provide mechanical force to cause the movement of the components attached with it. ठीक है, तो क्या करती है, अटैच जो होता है, फॉर एग्जांपल आपने मोटर पे व्हील लगा दी, ठीक है, तो वो मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पे चेंज करेगी, और मैकेनिकल फोर्स के कारण जो मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट से वो व्हील भी घूमने लगता है ना. आप किसी भी मोटर पे व्हील लगाते हैं, आप मोटर को पावर देते हैं, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग और वो आगे बढ़ने लगता है. सो जैसे हम हैं, जैसे हम चलते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारी जो चीजें हैं, वैसे ही एक्चुएटर्स भी काम करते हैं. ठीक है. This is the second example of actuators. It is called LCD display 16 into 2. So this LCD display is an output device which is used to display text or number as output. आप देख सकते हैं, आप इसका यूज करते हैं या तो आपको जब टेक्स्ट डिस्प्ले करना हो या आपको जब नंबर डिस्प्ले करना हो. Okay, so the display has an LED. Okay, the display has an LED backlight, can display 32 characters in two rows. This 16 to 2, and with 16 character on each row. ठीक है, each row पे क्या होता है, 16 character होता है, total 32 character display करते हैं. That's why we can call it as 16 into 2. So they display only text. They do come in many sizes and colors. For example, 16 into 1, 16 into 4, 20 into 4, with white text on blue background, with black text or a green, or many more. But the functionality is the same. It is a display actuator. Okay, so you can see each of these rectangles is a grid of 5 into 8 pixels. Okay, inside of that LED's display. Fine. Now, this is another type of actuator. So it's buzzer module. It is a buzzer module. So what is a buzzer module? So piezo buzzers are constructed by placing electrical contacts on the two faces of disc of piezoelectric material and then supporting the disc at the edges in enclosure. You can see the image. वो जो गोल दिख रहा है ना आपको सर्कल टाइप का, that is called a piezo. Okay, piezoelectric material. Piezo disc and the electrode, you can connect that things. So when a voltage is applied across the two electrodes, you can see the electrodes. Okay, the piezoelectric material mechanically deforms due to applied voltage. तो आप जब piezoelectric material क्या होता है, जब उसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देते हैं, सो क्या होता है, वो चेंज होने लगता है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज. सो this movement of the piezo disc within the buzzer creates a sound in similar manner as the movement of ferromagnetic disc in the magnetic buzzer or the speaker cone. आपने देखा होगा ना कि जब हम जो बजर स्पीकर होते हैं, स्पीकर में पीछे में एक मैग्नेट लगा होता है. कहीं पे भी आप देखना, कोई भी निकालो, आप ईयरफोन होता है ना हम सुनते हैं, यू कैन, आपने देखा होगा आपके पास जो कोई खराब ईयरफोन होगा, आप एक बार यूज करके देखिएगा, उसके अंदर भी मैग्नेट्स लगे होते हैं. ओके, सो सेम जैसे पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क का मैंने आपको फंक्शनैलिटी बताई, जैसे ये काम करता है, सेम वैसे ही बजर भी काम करता है. ओके, सो द फंक्शनैलिटी इज सेम. ओके, नाउ कम विद द रिले मॉड्यूल. व्हाट इज रिले मॉड्यूल? सो रिले is a device which can be used as electronic switch. रिले स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ. ये स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ. तो इफ यू वांट टू कंट्रोल एनी कंपोनेंट वर्किंग ऑन हायर वोल्टेज, है ना, विथ 5 वोल्ट ऑफ आर्डिनो, यू कैन डू इट यूजिंग रिले मॉडल. ठीक है, आप रिले मॉडल यूज कर सकते हैं. आप जैसे इमेज में देख सकते हैं क्या हो रहा है, पावर आया, ज्यादा पावर हुआ, रिले काम किया, स्विच कर रहा है ऑन. जैसे यहाँ पे हीट हुई, यहाँ से देखा बैटरी लगी हुई है, वहां पे जाके टच हुआ, स्विच कर रहा है, तो ऑन ऑफ कर रहा है. तो ये क्या करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण वहां पे रिले काम कर रहा है. तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन. सो व्हेन द सर्किट ऑफ द रिले सेंसेस द फॉल्ट करंट, है ना, रिले में क्या होता है, जब फॉल्ट करंट आता है, इट एनर्जाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस
temporary magnetic field, not a permanent magnetic field. This magnetic field moves the relay armature for opening or closing the connection. Okay, relays can be single channel or the multi-channel. So basic thing, these all are the actuators. Don't forget these things. Don't forget about this word actuator, because we are discussing the things about the actuator. So what are the applications where we can use this actuator? So if we're talking about industrial application, we can use these things in turbines for generating the power. It will rotate the turbine and it converts the water that energy into the electrical energy. है ना? Then comes to the compressors. है ना? We can use that things to the compressors also. Ships, है ना? For that rotating that turbine, that things. Okay. Then rolling mills. Okay. Paper mills, industrial fans. So here we can use that actuators. And if I'm talking about home and the other application, you can see we can use this thing in fans, AC, washing machine, juicer grinder. So you can see we can use actuators almost everywhere in our daily life, everywhere. Okay. So there's an interesting thing, when and who developed this motor first. Okay, so because we are discussing the thing, but we don't know about the person who first invented these things. So the first ever motor invented was by the Thomas Davenport, which was a battery powered electric motor. Okay, आप इमेज देख सकते हैं कैसे दिख रही है. Okay, so it was used to power a small scale printing press. Printing press में use हुआ करती थी, है ना? It was launched in like market in 1834. 1834 में market में ऐसे launch किया था. So motor is also a generator. जैसे मैंने आपको बताया ना, turbines में होता है तो generate करती है electric energy. So if you rotate the shaft of the DC motor, you can get electricity at the terminals of the motor. है ना? अगर आप हाथ से घुमाएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वहां. तो वो क्या कर रहा है, आपकी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज करें. So that's how the motor also works as a generator. So we discussed some about, or some type of about the things that motor key, how many types of actuators are there. So we talked about the motors or the relays or the LCD screen. So like that, we have different types of motors also. Like normal DC motors, then comes to the stepper motors, servo motors. The use is different because the working principle is different. Okay, so there's lot of components are there as working as actuators. Now, I have a small video. I will show you that like robotics world, and where we can use, you can just watch the things and write it down the comment section where we can use the motor in that robot. मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा आपको वो वीडियो देखना है और आपको ये लिखना है कमेंट में कि उस रोबोट्स में और उन जगह पे हमने कहाँ कहाँ पे एक्चुएटर्स का यूज किया है. यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. आई विल चेक इट. ओके, एंड आई विल शो यू द वीडियो. Robots have jumped from the screen and science fiction pages into our reality, disrupting almost every modern industry. Agriculture, space, travel, medicine, and manufacturing are just a couple of places robots have begun to appear. You could argue that they have already started to take over our world. Just in the past few decades, robots have reached new heights. The continual and rapid progress of artificial intelligence, paired with readily available large data sets, lower prices for sensors and electronics, and a steady demand for efficiency, has created the perfect storm for engineered innovation. Yet you should not be intimidated by robots. Though robots are certainly complicated pieces of machinery, they are also delightfully simple to understand. In a lot of cases, robots are based on us humans. You can even build your own simple robot at home.
But before you can go off and make your own, you should understand a robot's workings first. Defining a robot can be tricky as it tends to be used as a blanket term to describe any machine that can perform work or other actions normally performed by humans, either automatically or by remote control. On the most basic level, there are 5 major human organ systems that have a corollary in robotics. A skeletal structure, a muscle system to move the skeleton, a sensory system that receives information about the body and the surrounding environment, a power source to activate the muscles and sensors, and finally, a brain that processes sensory information and tells the muscles what to do. Many types of robots also include these systems. First, you have the controller of the robot, which could also be called the brain of the robot. A computer program usually runs this, and it gives the robot detailed commands to follow. Space between objects. However, by the night of its surroundings, logic as well as you. Honda's Asimo can learn independently, walk on 2 legs, and climb stairs. Toyota's THR3 has never been easier. You don't need that much. There are extensive communities out there dedicated robotic arm, or even a mini still very limited. The movements, actions, and reasoning of a toddler still far exceed the capacity of some of the the main motto to show this video to you is the motor is everywhere. Motor is everywhere. Okay, and the actuator, sorry, the not motor, the actuator is everywhere. But how to examine actuators practically? आप कैसे practically इसे use कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने बताया था आपको टिंकर कैड के बारे में, तो आप सब टिंकर कैड ओपन कर लीजिए. ठीक है, मैं आपको टिंकर कैड में एक छोटी सी सर्किट्स बनाना सिखा रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस इंटरफेसिंग एक्चुएटर विल स्टार्टिंग द थिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स. अब हम आगे जो भी सेशन करेंगे हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. Now we know about the input things that is called as sensors, how many types of sensors, the working principle, the applications, then the electronics development board, that Arduino, the brain thing. The third thing is the actuator. Now we'll start making project and we'll do some basic coding session also. कि what, how to write a basic code. Because इन चीजों को करने के लिए you have to write a code. If you want to do something automatically, you have to write a code for that project. Okay, you can see here, I have just used 2 DC motor. You can see, this is a DC motor 1, this is a 1, and this is a 2 DC motor. So DC motor में 2 लीड्स है, मैंने आर्डिनो यूज किया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लीड्स कौन सी है, रेड इज टर्मिनल 2, इज टर्मिनल 1. अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. As every electronics components have the positive and the negative lead, you can call as plus and the minus line. Is that motor also have positive and negative? है ना, मेरा क्वेश्चन क्या है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर कंपोनेंट्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, प्लस माइनस. चाहे बैटरी यूज कर लें, चाहे एलईडी यूज कर लें, क्या मोटर में भी प्लस और माइनस होता है? यह आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन. ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है. तो यहाँ पे है 2 टर्मिनल्स, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2. सो टर्मिनल 1 को मैंने क्या किया है, आर्डिनो के ग्राउंड पे कनेक्ट किया है, और टर्मिनल 2 को डिजिटल पिन के 7th नंबर पिन पे कनेक्ट किया. ठीक है, अब मैंने डिजिटल पे क्यों किया, एनालॉग पे क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को सिर्फ ऑन और ऑफ करा. अगर मैं कोड दूं ऑन हो जाए, कोड ना दूं ऑफ हो जाए. दैट्स इट. देन सेम मैंने दूसरी मोटर ली, उसके भी ब्लैक वाले साइड, दैट इज टर्मिनल 1 को ग्राउंड पे एंड टर्मिनल 2 को डिजिटल पिन पे किया है 8 नंबर. आप कोई भी पिन यूज कर सकते हैं, आपके पास 14 डिजिटल पिन्स होती है आर्डिनो ऊनो के अंदर. आप चाहे तो 8 और 9 पिन यूज कर लो, या 10 11 कर लो, 2 3 कर लो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो मैंने सिंपल 2 मोटर को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया. अब मैंने इसका कोड लिखा. अब मैंने कोड में क्या लिखा, एकदम सिंपल. ठीक है, मैंने 2 पिन मोड लिया है, एक पिन को 8th नंबर पे कनेक्ट किया है, एक मोटर को 7th नंबर, और मेरे को उनसे आउटपुट चाहिए. अब आउटपुट क्या है, देखिए, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो दोनों मोटर चलने लगेगी. देखिए 8 भी हाई
और 7 भी हाई, हाई मतलब ऑन। ठीक है, कितने टाइम के लिए मैंने डिले दिया हुआ है, ठीक है, बट बंद नहीं होगी। अब देखिए, इसे आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, देखिए उतने डिले के बाद चालू हो गई, जैसे स्टार्ट हुआ ये चालू हो गई, अब ये चलते रहेगी, देखते रहिए। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको एक मोटर को, फॉर एग्जांपल मैं एट्थ वाली जो सेकंड मोटर है, या फर्स्ट मोटर, सॉरी फर्स्ट मोटर जो है, उसको अगर मैं ऑफ कर दूं, मैं चाहता हूं कि ये जो मोटर है ये चले 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक चलती रहे, ठीक है, और फिर बंद हो जाए। ठीक है, फिर बंद हो जाए, और कितने टाइम तक बंद रहे, ये बंद हो जाए, और ये बंद रहे 1 सेकंड तक, फिर चालू हो जाए। ये मैंने एक ही मोटर किया, बट दूसरी मोटर चलते ही रही। मैं फिर से स्टार्ट इसको, मैं सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ, मैं फर्स्ट मोटर को देखिए आप अभी। सेकेंड, आप दोनों मोटर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लो और हाई कर सकते हैं अपने हिसाब से डिले देख के। ठीक है, वो डिले आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना डिले दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, सेमी कॉलम का यूज नहीं किया है। अब मैंने दोनों कोड के लिए दे दिया है, ये वर्क करेगी। देखिए अब ये बंद है, ठीक है, बाद में चलेगी क्योंकि मैंने डिले दे रखा है। अब ये देखो, ये चली इतने सेकंड के लिए, ये चालू हो गई, ये तुरंत एक एक सेकंड दिया, नहीं एक एक सेकंड में ऑन ऑफ होगी। ये 10 से 5 सेकंड चलेगी, 2 सेकंड बंद, 1 सेकंड बंद रहेगी। देखिए ये चलेगी। तो ऐसे करके आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो ब्रेन लगा के। ठीक है, ये मैंने ब्रेन लगाया था, इसी का हम यूज करके वी विल यूज दिस थिंग, दिस नॉलेज इन आवर अपकमिंग सेशन फॉर मेकिंग अ प्रोजेक्ट्स। ओके, हियर आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स। दिस इज अ सर्वो मोटर, मैंने एक सर्वो मोटर ली है, सेम सर्वो मोटर्स के पिन है आर्डिनो के साथ मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सर्वो मोटर को आर्डिनो पे कनेक्ट किया है, 3 पिन है। पहले ये ग्राउंड, तो मैंने ग्राउंड वाली पिन को ग्राउंड पे कनेक्ट किया है। दूसरी पिन है पावर की, तो पावर को हम 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पावर को मैंने 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया। तीसरी पिन है सिग्नल, तो सिग्नल को मैंने डिजिटल के 9 नंबर पिन पे कनेक्ट किया। सेम ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर यूज किया, जिससे मैं मोटर को कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे आपने स्विच देखा है ना, फैन का जो वो होता है स्पीड कंट्रोलर, जैसे आप कम करते हैं वोल्ट तो स्पीड बढ़ जाती है, फिर कम कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं फैन की स्पीड रेगुलेट करने के लिए। वैसे ही वो पोटेंशियोमीटर होता है, ये पोटेंशियोमीटर है जिससे मैं मोटर की रोटेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है, इसे भी मैंने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके कोड कर दिया। ठीक है, डिफरेंट कोड और बहुत बड़ा कोड है ना। विल डिस्कस दिस कोड आल्सो। सी, मैं इसे ऑन करता हूँ, है ना, फिर स्टार्ट। ठीक, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इनसे आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मींस आप कोई भी चीजें, कोई भी एक्चुएटर्स यूज करें। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट दे रहा है, मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ब्रेन पे जा रहा है, आउटपुट मिल रहा है। यही हमें तीनों चीजें जान ली थी, हम तीनों चीजें के बारे में जान लिया। क्या क्या थी 3 चीजें? 3 चीजें जो मेन चीजें हैं वो है इनपुट, जो हमने सेंसर में पढ़ा, सेंसर्स, व्हाट इज सेंसर्स, द सेकंड द इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट बोर्ड, एंड द थर्ड वन इज द आउटपुट डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज एक्चुएटर। नाउ हमें सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया है। नाउ विल स्टार्ट मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ऑन द नेक्स्ट सेशन। ओके, और जो मैंने पूछा था कि मोटर में प्लस माइनस नहीं होता मोटर पे, क्योंकि मोटर पे क्या होता है,
ये आपका क्वेश्चन है। मैंने ये बता दिया मोटर पे प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। मोटर में पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो आप अगर चेंज कर देंगे मोटर, अगर आप मोटर को पावर दे रहे हैं, वो क्लॉकवाइज घूम रही है, आप चेंज कर दीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। इसलिए उसमें प्लस माइनस नहीं होता, उसमें पोल्स होते हैं, ठीक है। So this is all about today's session, our discussion about what is actually a actuators and all. Now this is our learning platform, जैसे मैंने आपको बताया innovation.ai, है ना। तो innovation.ai हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको वहां जाके रजिस्टर करना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, यू कैन जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, लिंक पे क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, और बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहां मिलेंगे, क्विज़ेस के साथ, असाइनमेंट के साथ, ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, वीडियोस हैं, बहुत ही मजा आएगा। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द थिंग्स। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। सर बंद कर दीजिए।